fur. So fur is the sound that birds make when they fly. This is not fur. Fur is the skin of an animal, okay, like bear or tigers. They have a fur, but this is fur. Okay, that is the sound that birds make with their wings. ठीक है? So this is an exciting chapter. Let's see what happens. The first bird. On my head, I have a crest. So you can see on the head of the peacock, there is a crest here. Okay, that's called a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. तो ये कौन सी पक्षी है? You all know it's very simple. It's also the national bird of our country. Okay, so this is a peacock, right? So this is a peacock. Let's see the next bird. Long and grooved is my tail. High up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. The dash is what you call me. So do you know what this animal is? Yes, it eats mice and it goes up in the sky. एकदम आकाश में बहुत ऊंची ऊंची फ्लाइट लेता है ये बर्ड एंड इट ईट्स माइस, चूहे खाता है. तो ये कौन सी पक्षी है? यस, इट इज द ईगल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट बर्ड. माय फेदर्स आर ग्रीन. माय बीक इज रेड. Guava and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. So this bird's feathers are green. Okay, you can see the bird here. It eats chilies. Its beak is red. और वो उसको सबकी कॉपी करना पसंद है. तो ये कौन सी बर्ड है? Yes, parrot. Let's see the next bird. Black are my feathers and black is my color. Craw, craw I do all day long. Okay, so here is the bird. So this you see everywhere in the city. Okay, it's very easy. So it's a crow. Okay, you will fill in the blanks. Is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. What is my name? तो ये कौन सी बर्ड है जिसका एक बहुत ब्यूटीफुल साउंड है? सो यस, इट इज़ द कुकू. इन हिंदी वी ऑफन कॉल इट कोयल और इन गुजराती ऑल्सो वी कॉल इट कोयल. ओके, द नेक्स्ट बर्ड. डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. Vulture is what I am called by. Okay, the name of this bird is also vulture only. So these birds, they eat up other dead animals and they clean up the places like this. Okay, the next bird. My beak is pink, feathers grey. Gutter goo I go on all day. In houses I make my home. A dash is how I am known. So this bird you have seen all over the city, on your terraces, on your roofs. They are there everywhere. Yes, they are called pigeons. Okay. Then my beak is a very special. I use it like a needle. Stitching leaves, I make my home. The dash bird is how I am known. So this bird, it uses its beak to make its home. It stitches the leaves together. So it's a special quality. So this is called the tailor bird. Okay, so this is what it does. It uses its beak to stitch the leaves together and make its nest. So let's see the next bird. In trunk of tree holes I make, hidden insects I intake. Tuk tuk tuk, I work all day. The dash is what people say. Okay, so what is this bird? You must have all seen. वो अपने बीक से ट्री के अंदर एक होल करती है और उसी होल में फिर वो
रहती है ये बर्ड, ठीक है, तो इसको कहते हैं woodpecker. So this bird is called the woodpecker. So you can see there's one owl and there's another bird. Okay, which is there? So the owl is asking, why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. So the bird says, dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. तो क्या हो रहा है, सब पक्षियाँ इकट्ठा हो गई है और वो अंदर अंदर झगड़ रही है कि कौन सबसे सुंदर है. So what has happened? There was a meeting of birds. Owl has started the talk. It said, we are all special in our ways. Our claws, beaks, feathers, and sounds are different. Yet we are all birds. If we all looked alike, ate the same food, and made the same sounds, think how dull the world would be. So the owl is wise. बहुत होशियार है. वो आगे आके आउल ने सबसे पहले बोला कि हम सब की जो बीक, जो चोंच है, वो सबकी अलग है. सब खूबसूरत है, सबके रंग अलग अलग है, सबके फेदर्स अलग अलग है. हम सब अलग अलग खाना खाते हैं. अगर हम सब एक ही चीज़ करते तो क्या होता, कितना बोरिंग हो जाता. इसीलिए भगवान ने हम सबको अलग अलग चीज़ें दी है. सो दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. सो दैट इज़ व्हाट द आउल सेड. ओके, so let's see the next exercise. Think and write. Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. तो अब तक के जितने भी पक्षी आपने ये टेक्स्ट बुक में देखे हैं, इनमें से कौन सी पक्षियाँ आप देख चुके हो ऑलरेडी. आपने कभी टेलर बर्ड देखा है तो उसका नाम लिखिए, कभी पीकॉक देखा है तो उसका नाम. जो पक्षियाँ नहीं देखी है आपने, उसका नाम मत लिखना, ठीक है. Find out. Now go out and look for birds around. अभी आप आपके टेरेस पे जा सकते हो, आपके पास गार्डन है तो गार्डन में जाओ, फार्म हाउस है तो वहाँ चले जाओ, कहीं जाओ और आसपास के बर्ड्स ढूंढो. और कितनी बर्ड्स आप देख सकते हो. How many birds can you see? How many birds do you know from them? So if you see 10 birds, so out of the 10 birds, how many birds can you recognize? So you recognize a peacock, a crow, a pigeon. These are a few common names. But which are the few birds that you do not know? So find out those birds also. Okay? Now come to where did you see these? Okay? So you will write the name of the birds that you see, and in the next block, for example, there is in water. So for the first thing, let's write peacock. So we will write peacock. Let's write peacock here. Okay. So peacock lives in water? No. So what you will do is you will put a cross here. Then the peacock lives on a tree? No, a peacock does not live on a tree. Why the peacock does not live on a tree? उसका वजन बहुत होता है तो वो ट्री पर नहीं जा सकता है, वरना ट्रीज के जो ब्रांचेस है वो टूट जाएंगे. तो मोस्टली पीकॉक्स कहाँ रहते हैं, वो या तो वो ग्राउंड पे होते हैं, सो यू विल टिक दिस, या तो वो घर के कहीं पे, घर के ऊपर या कहीं पे होते हैं, सो यू विल टेक दिस. सो डू दे फ्लाई? यस, दे फ्लाई, सो यू विल टेक ऑल्सो दिस. ओके, so this is what you will do. So you will write 4 more birds and you will similarly you will put a cross or a tick. Is that clear? It's that simple. You have to do it in your textbook. Now let's come to next exercise. Have you ever noticed that different birds have different types of beaks? Given below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their names. So हर एक पक्षी की जो बीक, जो चोंच होती है, वो अलग होती है, उसकी डिज़ाइन अलग होती है, उसके हर एक पक्षी का काम अलग होता है. अगर वो ग्रेन्स खाते हैं तो उनकी जो बीक अलग होती है, अगर वो माइस या कुछ मीट खाते हैं तो उनकी बीक अलग होती है. सो दैट इज़ हाउ दे आर डिज़ाइंड. ओके, सो लेट्स सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस बर्ड्स.
Okay, it's very easy. You have all seen these birds, so you can do it on your own. Okay, can you identify these birds? Okay, so the first one here has already come up. Okay, this one is, can you identify this bird? Okay, you might not know the name. It's called the heron. Okay, a third image is blank here. So this, you will draw your own bird, you will draw its beak, okay, and you will write down its name here. Okay, the next exercise, match the birds with their foods. So all these birds you all know now. We have already gone through these birds. You all know what they eat. Okay, so there are chilies here, there's a dead bird here, there are grains, there is a mice, and then there are ants or insects. Okay, so you know the first one is a vulture, then we have an eagle, we have a woodpecker, we have a parrot, and we have a pigeon. So what you will do is you will take your pencil and you will draw lines to the food that they all eat. ठीक है, आपको join करना है, match करना है, कौन सी bird कौन सा food खाती है. Okay, let's continue. Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? Their neck movements also differ. The myna moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a great extent. तो क्या बोलते हैं हम इधर हमको कि हर एक पक्षी की एक अलग अलग वॉकिंग स्टाइल होती है. सो फॉर एग्जाम्पल द माइना, व्हेन द माइना वॉक्स शी कीप्स मूविंग हर नेक इन फ्रंट एंड इन बैक इन स्मॉल जर्क्स. आगे पीछे अपना नेक हिलाती है. द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स. आउल ऑलमोस्ट उसका नेक पूरा पीछे देख सकता है. ठीक है. देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो हमारे जैसे ही बात कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल द पैरट और द मकाओ. डू यू नो द नेम ऑफ सच बर्ड्स? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, color it and write its name. So in the EVS notebook, you're going to draw a bird that can talk like us, like humans. Okay? Observe. Go outside and watch how birds walk and move their necks. Look at their feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements too. Ask your friends to guess which birds you copied. So आप बाहर जाओगे, कोई भी 3 बर्ड्स को आप ऑब्जर्व करोगे, वो कैसे वॉक करते हैं, उनके कलर्स क्या है. ठीक है. एंड यू विल राइट डाउन. देन यू विल गो टू योर फ्रेंड्स और टू योर फैमिलीज एंड यू विल टेल देम. आप उनको बताओगे कि ये चीज़ है, तो ये कौन सी बर्ड है. आपको ऐसे करके क्विज पूछना है. ठीक है. 3 बर्ड्स के क्विज पूछना है आपको. लेट्स रीड फर्दर. द फेदर्स ऑफ बर्ड्स are of different colors, shapes, and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of birds flying around. So, हर एक birds की जो feathers जो होते हैं वो अलग अलग colors के और अलग shapes के होते हैं और sizes भी. और वही फेदर से उनको उड़ने में मदद होती है. ऑल्सो उनको वार्मथ, जब ठंडी होती है तो फेदर से उनको वार्मथ मिलता है. टाइम टू टाइम, हर कुछ महीनों में उनके जो फेदर्स होते हैं वो गिर जाते हैं और नए फेदर्स ग्रो होते हैं. जैसे आप भी ग्रो होते हो, आपके बाल ग्रो होते हैं, वैसे उनके फेदर्स भी ग्रो होते हैं. आपने बहुत सी जगह पे फेदर्स गिरे हुए देखे होंगे. आपको पिकॉक के फेदर्स मिले होंगे या क्रो के फेदर्स मिले होंगे. सो दोज फेदर्स ग्रो बैक. कलेक्ट फेदर्स which you find lying around. Study their shape, size, color and discuss about them. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. Other than birds, which are other animals that can fly? So you will write the name of 6 animals अदर देन बर्ड्स. पक्षी के अलावा ऐसे 6 और नाम आपको देना है
एनिमल्स के जो उड़ सकते हैं। ऐसे कौन से 6 एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं? बर्ड्स नहीं। बर्गर। सो थिंक एंड राइट। इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो? वॉट एल्स वुड यू डू? तो अगर आप एक पक्षी की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाते और क्या करते? सो if I could fly like a bird, I would fly to a beautiful place where it's very peaceful and quiet and no pollution is there. So this is what I would do if I was a bird. Now you have to write on your own answer. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होता अगर पक्षियाँ उड़ नहीं सकती, खाली चल सकती जमीन पर? सो वॉट वुड हैपन? सो दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स। अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता या उनको कभी खाना हंट करना पड़ता, सो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट. What would happen if birds could not fly? So if birds could not fly, it would become very difficult for them to save themselves or look for food. Okay, so in the last exercise they're asking is to make a cock. You all know what a cock is. Okay, it's a bird. Okay, early in the morning it does cock-a-doodle-doo. Okay, when the sun rises. So we are going to make this. Okay, I'm going to show you a video and you will also try to make it on your own. Okay.